Assalamu alaikum. This is Fiza Shakil. I hope you all are doing well. This video is about the general introduction of pharmacy. We will learn what is pharmacy, its branches, and various professional aspects of pharmacy. Pharmacy. When we look at this word, the first thing that comes to our mind a place having a huge amount of medicines, mainly where medicines are dispensed. Now, what is dispensing? Dispensing is the process of giving medication or preparing medication to a named person on the basis of prescription. In a simple way, प्रिस्क्रिप्शन की बुनियाद पर कोई भी हम जो फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं, कोई भी ड्रग प्रिपेयर करके हम पेशेंट को देते हैं, उस प्रोसेस को डिस्पेंसिंग कहते हैं. Okay, now let's see the definition of pharmacy. Pharmacy is the art and science of preparing and dispensing medications and the provision of drug-related information to the public. In art, we will study the dosage form according to their weight, color, texture, and diameter. While in science, we will study the dosage form of a drug according to their chemical reactions, their properties, incompatibilities between the drugs that we give to the patient, and the provision means the spread of drug-related information to the public. It involves the interpretation of prescription orders. जो प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी में आई है उसको एक्सप्लेन करना पेशेंट को. द कंपाउंडिंग means the mixing or combining of two or more ingredients or drugs. दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स या ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड मेडिसिन को मिक्स करके एक न्यू मेडिसिन बनाने को हम कंपाउंडिंग कहते हैं. कंपाउंडिंग में बेसिकली हम लोग उन फॉर्मुलेशंस को बनाते हैं जो प्रोडक्ट मार्केटेड ना हो. लेबलिंग, जो लेबल आप देख रहे हैं, इस तरह का लेबल बनाया जाता है. Labels also have many types, but in dispensing we also mention the patient name, his presenting conditions, prescriber name, prescribed drug name, ingredients used, and doses, etc. ड्रग प्रोडक्ट सिलेक्शन. जो ड्रग या मेडिसिन हमने प्रिपेयर करनी है उसकी कंपैटिबल इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करते हैं उसको बनाने के लिए. एंड ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यूज. प्रिस्क्राइब ड्रग को डिस्पेंस करने के बाद उसका यूज पेशेंट में चेक करना कि वो ड्रग उस पर इफेक्ट कर रही है या नहीं, या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही. ये सारी चीजें हम ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू में स्टडी करते हैं. पेशेंट मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन and provision of community services related to the use of medication and devices. Community services means the comprehensive and overall review of patient medicines and dietary regimen issues related to the use of medicines. अब हम देखते हैं इसकी branches. There are 5 branches of pharmacy that we will learn in the next video in detail. Pharmaceutics, pharmacology, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, and pharmacy practice. Various professional aspects of pharmacy: hospital pharmacy, clinical pharmacy, retail pharmacy, industrial pharmacy, and forensic pharmacy. We will also discuss it in detail in the next video. If you learn anything from this video, then please like, comment, share the video, subscribe to this channel, and press the bell icon. Thank you.